very much, sir, for coming here and giving. సార్ కృష్ణబాబు సార్ సార్ కృష్ణబాబు సార్ సార్ కృష్ణబాబు గారు That time it is 13 districts. That is why we only got 30. Now it has become 20. Our MD Garu, Muralidhar Reddy Garu IAS, presenting bouquet to our chief guest of Honorable Minister Garu. Our Commissioner Health and Family Visit Welfare and Mission Director, respected Nivas Garu, presented bouquet to our Honorable Minister Vedula Rajdi Garu. Malladi Vishnu Garu, respected, they are felicitated our Honorable Union Minister Garu. Our respected K. Srinivasa sir is going to felicitate our Central Health Minister, respected Mansukh Mandaviji Garu. Department, respected Sri M.P. Krishna Babu Garu IAS, Heartily Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, Babu Garu. Our today's chief guest, we are going to invite for the lighting of lamp is the symbolizes the cosmic force of divine light, knowledge and the destructions of ignorance. మన గౌరవ ముఖ్య అతిథులందరూ కూడా జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేసి It is a great day for the health department. Honorable Minister for Health and Family Welfare, Government of India, Mansukh Mandavia ji, has taken time to visit Andhra Pradesh to kickstart some of the important infrastructural developments being taken up with central assistance in Andhra Pradesh. I heartily welcome our Honorable Minister Rajani Madam for Health, Family Welfare and Medical Education. I heartily welcome Kesinen Nani Garu, the local Member of Parliament, Bhagyalakshmi Garu, Honorable Mayor Vijayawada City. We also have special guest, Honorable Member of Parliament Anakapalli, who has come all the way because the critical care block of Anakapalli also, Honorable Minister has just now laid the foundation stone. And I welcome Honorable MLA and Vice Chairman AP Planning Board, Malladi Vishnu Garu, and all the dignitaries from Government of India, the state government and all the invitees. It is a great moment for us. The Government of India has taken up huge infrastructure development program in the wake of COVID. After COVID, we are seeing
the Honorable Minister Mansukh Mandaviya ji was leading almost from the front, and entire infrastructure improvement from that time onwards to prepare India for any future pandemic, because when the COVID struck us, so many of us does not know much about COVID, or we are not having infrastructure to deal with it. That is the reason why we lost very precious lives in second wave, where Delta COVID virus has struck us with a lot of respiratory problems and lung infections. Keeping that in mind, the government of India has gone for very massive infrastructure upgradation plan, and made many plans like emergency COVID response program, ECRP 1 and 2, and the PM Abhim. Now all these components, critical care blocks, India, integrated public health labs and BSL labs, all are part of Prime Minister's Ayushman Bharat health infrastructure mission. So huge program is taken up to ensure that entire infrastructure is upgraded to meet any eventuality, any health emergency. Sir, you are kind enough to give almost 14 the critical care blocks, which will be very much useful to tackle the top 5 causes of mortality, almost, whether it is a coronary artery disease, COPD, stroke, diarrheal diseases, or neonatal disorders. All that, actually there is a ICU and treatment facility along with the specialist in all the CCUs. Each hospital, the 14 blocks, one is 100 bedded and balance 13 are 50 bedded, sir. So out of 602 facilities given in entire India, we got 14, and IPHL labs also, each district we got one. So this definitely will help us to meet any eventuality in much better way. Similarly, BSL 3 lab, out of the 10 BSL 3 labs sanctioned in entire India, Honorable Minister has sanctioned one to our place, Vijayawada. So this will be useful for us to study the pathogens and any type of pandemics which are likely to come, to analyze and see that we are prepared for it. Sir, without taking much time, I request the Honorable MP Vijayawada to just say a few words on this occasion. నమస్కారం. ఈరోజు మన ముఖ్య అతిథి భారతదేశ ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా గారికి, అట్లాగే మన రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి రజనీ గారికి, అట్లాగే కృష్ణబాబు గారికి, ఆరోగ్య శాఖ సెక్రటరీ కృష్ణబాబు గారికి, అట్లాగే సోదరుడు మేయర్ ఎమ్మెల్యే విష్ణు గారికి, అట్లాగే మేయర్ గారికి, భాగ్యలక్ష్మి గారికి, అట్లాగే మా సహచర ఎంపీ అనకాపల్లి ఎంపీ సత్యవతి గారికి, అట్లాగే అందరికీ, ఈ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి, అట్లాగే ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈ ముఖ్యంగా హెల్త్ అనేది ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా, ముఖ్యంగా పేదవారి దగ్గర నుంచి ధనికుల వరకు కూడా పెద్ద ఇష్యూ. సో క్వాలిటీ హెల్త్లో ముఖ్యంగా ఈ కోవిడ్ తర్వాత నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి అనేక చర్యల్లో మరి ప్రతి పేదవాళ్ళకి హెల్త్ ప్రభుత్వ రంగం నుంచి ఉచితంగా ఇవ్వాలనే ఒక దీంతో ఈ కార్యక్రమం తీసుకున్నారు. దానికి అభినందనలు మోడీ గారికి, ముఖ్యంగా ప్రధానమంత్రి గారికి, అట్లాగే మన మంత్రి గారు మాండవియా గారికి కూడా. అట్లాగే మనం ఇప్పుడు చూస్తే హెల్త్లో దేశవ్యాప్తంగా కూడా కోవిడ్ తర్వాత అనేక మార్పులు వచ్చినాయి. దాంట్లో భాగంగానే ఇప్పుడు అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ ఆఫ్ క్రిటికల్ హెల్త్ కేర్ కానీ మిగతా అన్ని కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కేంద్ర ప్రభుత్వం క్రియేట్ చేస్తూ ఉంది. అట్లాగే మనం కేంద్ర మంత్రి వారిని విజయవాడ ఎంపీగా ఈ ఫెసిలిటీ విజయవాడకి ఇచ్చినందుకు పాత గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మనస్ఫూర్తిగా విజయవాడ ప్రజలందరి తరఫున నేను అభినందిస్తున్నాను సార్.
Mandivya sir, on behalf of the public of Vijayawada, I heartfully thank you for giving us this facility here, critical care facilities in this old government hospital here. Actually, this one block was foundation laid in 2018 and now I think the cellar is over and now you have given 23 crores for this facility, critical care facility. I appreciate you. I thank you on behalf of the people of Vijayawada. Also, I would like to say, on my request, last time when your BJP national president, now the best national president, Nadaji was the health minister, he gave 120 crores for multi-specialty hospital in this GGH, Government General Hospital. For that, the state government gave a gap funding of 30 crores, 150 crores. The very nice facility, multi-specialty facility in Vijayawada has been ready and it has been very helpful during the COVID, sir. We thank you very much, to thank Narendra Modi ji very much, and also for the AIMS, which has been set up next to here only Nangalgiri, where the state government has given nearly 180 acres of land, and with 2,000 crores of investment, AIMS is ready. I request all the people of Vijayawada and surrounding Vijayawada to use this AIMS multi-specialty hospital, and also this critical care is coming up. చాలా పెద్ద ఎత్తున నరేంద్ర మోడీ గారి గవర్నమెంట్ ఈ క్రిటికల్ కేర్ మీద, హెల్త్ మీద ఫోకస్ చేయడం చాలా మన అదృష్టం. కాబట్టి మరొక్కసారి విజయవాడ ప్రజలందరి తరఫున మంత్రి గారిని, నరేంద్ర మోడీ గారిని అందరినీ కూడా నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి పెద్దలు మాండవీయ గారు, అలాగే వేదికను అలంకరించినటువంటి రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రివర్యులు, పెద్దలు పార్లమెంట్ సభ్యులు నాని గారు, మేయర్ గారు, కృష్ణబాబు గారు, నివాస్ గారు, అలాగే అనకాపల్లి ఎంపీ గారు, కలెక్టర్ గారు, ఇతర వైద్య ఆరోగ్య శాఖకు సంబంధించినటువంటి సిబ్బంది, ఈరోజు విజయవాడ నగరంతో పాటు ఇతర జిల్లాల్లో కూడా ఈ క్రిటికల్ కేర్ సెంటర్ అని చెప్పని కేంద్ర ప్రభుత్వము తీసుకుంటున్నటువంటి దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు విజయవాడ నగరానికి 24 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేసి భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో ఒక కీలకమైనటువంటి నిర్ణయాలు భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు మనం చూసాం అక్కడ ఉన్నటువంటి చూపించినటువంటి ఫోటో ఎగ్జిబిషన్, ఏ ఏ జిల్లాల్లో ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఏ రకమైనటువంటి మెడికల్ కాలేజెస్ వస్తున్నాయి, ఏ రకంగా హాస్పిటల్స్ వస్తున్నాయి, ఎన్ని మెడికల్ సీట్లు పెరిగినాయి, నాడు నేడులో ఏ ఏ కార్యక్రమాలు హాస్పిటల్స్కి రూపురేఖలన్నీ కూడా మార్చడం జరిగిందో ఒక భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో ఈ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి అధికారులందరూ కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఇలాంటి సందర్భంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మొన్న జరిగినటువంటి మనకి ఒక పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ని అధిగమించాలి అని చెప్పనే ఉద్దేశంతో నరేంద్ర మోడీ గారు, అలాగే కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి మాండవీయ గారు వీరందరూ కూడా ముందు చూపుతో రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ రకమైనటువంటి కార్యక్రమం తీసుకోవడం చాలా సంతోషం. 2 అంతస్తులే ఉన్నది అని చెప్పని చెప్తున్నారు అధికారులు కానీ, లేకపోతే గౌరవ మంత్రి గారిని కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే 5 ఫ్లోర్స్ వేస్తే ఒక పూర్తి స్థాయిలో మనకి ఇక్కడ వచ్చేటటువంటి పేషెంట్లకి సరిపోయే విధంగా ఉంటుంది. కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మంత్రి గారు కూడా అధికారులందరూ కూడా వారికి బ్రీఫ్ చేస్తే దాన్ని కూడా మంజూరు చేసి శాంక్షన్ చేసే విధంగా చేస్తారని చెప్పని కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్నటువంటి సహకారానికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలకి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు రెండు కూడా ఒక వైద్య ఆరోగ్య శాఖలో ఒక నూతన శకాన్ని ప్రారంభించి పనిచేస్తా ఉన్నాం. కాబట్టి ఈరోజు విజయవాడ నగరానికి ఈ హాస్పిటల్కి, విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో లొకేటెడ్ అయినటువంటి హాస్పిటల్కి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఇంత పెద్ద ఎత్తున నిధులు రావడం కూడా చాలా సంతోషం, ధన్యవాదాలు. కాబట్టి భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని కూడా మీరు శాంక్షన్ ఇస్తారని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం. which are given to the hospital. It will be a good facility, just
distinguished guests, allow me to extend my heartfelt gratitude to Dr. Manshuk Lakshmanbhai Mandavyaji, Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Government of India. My colleagues and esteemed officers from Government of India and the Government of Andhra Pradesh, respected healthcare professionals, ladies and gentlemen, today is a significant milestone as we gather to lay the foundation stone for 2 critical care blocks, a total of 14 CCBs allocated at a capital cost of rupees 350.25 crores and the BSL-3 laboratory. Additionally, we celebrate the inauguration of 7 integrated public health laboratories across the state with 13 IPHLs. My heartfelt appreciation to our esteemed guests and Dr. Manshuk Mandavya, the Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Chemicals and Fertilizers, Government of India, and all his dedicated efforts. And today, his efforts and his contribution is truly commendable, and it marks the momentous occasion in our commitment to advancing the healthcare infrastructure in the state of Andhra Pradesh. Let me begin by expressing my heartfelt gratitude from the government of Andhra Pradesh to Dr. Manshuk Lakshmanbhai Mandavyaji, whose relentless, dedicated efforts to health and family welfare has been a guiding force for the nation. Sir, your presence here today is an honor, and we appreciate the unwavering support and invaluable guidance you have extended to the state of Andhra Pradesh. Under your leadership, the Government of India, the PM Ayushman Bharat Health Infrastructure Machine has been a transformative initiative. Under your guidance, the Government of Andhra Pradesh, our Honorable Chief Minister, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, he's been a driving force in regards to our health sector. And now, especially the support what we have been receiving from the government of Andhra Pradesh, the PM ABEAM, which is launched in 2021. This scheme aims to strengthen the health systems and institutions, building resilience capable of responding to health emergencies. The substantial allocation of 1271.24 crores to Andhra Pradesh under PM ABEAM is a testament to the commitment of robust healthcare facilities in the state. Integrated public health laboratories, 13 IPHCLs, promoting coordination between health and allied departments and progressing well with 10 completed and 3 underway. Critical care blocks, the construction of 14 CCBs managing emergency and intensive care services is advancing swiftly, contributing significantly to reducing the burden on tertiary care facilities. BSL-3 lab, the establishment of this major milestone in public health will lay the foundation stone for the upcoming BSL-3 laboratories designed by the critical element for strengthening of surveillance of infectious disease and outbreak response. The investment in preventive healthcare, Village Ayushman Arogya Mandir, an investment of 1692 crores in establishment of 10,032 village Arogya Mandirs, emphasizing preventive healthcare accessibility. Primary healthcare centers, renovation of 977 and construction of 148 new PHCs with a budget of 670 crores. Enhancing healthcare infrastructure, upgrading 11 existing government medical colleges and attached institutions with an investments of rupees 3,820 crores, and establishing 17 new government medical colleges with a total investments of 8,480 crores, ensuring a steady supply of healthcare professionals. Arogyasri and Arogya Asra schemes, insurance coverage, providing health insurance coverage of up to 25 lakhs to over 1.48 crore families, which covers 90% of the population in this state. Financial assistance, Arogya Asra to take care of wage loss during the recovery phase by paying rupees 225 per day up to a maximum of rupees 5,000 per month for 1590 procedures. The state government is spending rupees 4,100 crores per annum under Dr. YSR Arogyasri Healthcare Services along with Dr. YSR Arogya Asra scheme. Jagananna Arogya Suraksha program, a comprehensive healthcare program aiming to offer doorstep healthcare services and facilitate the treatment at higher level and healthcare facilities adhering to the principles of inclusivity. Family doctor program, an innovative endeavor unparalleled in the nation,
is bringing healthcare within the reach of rural communities, profoundly impacting the lives. Bhaiya, I'm confident that witnessing the dedicated efforts of our doctors and this initiative will lasting an impression definitely on the state, and definitely it is going to change the healthcare in the coming forward generations. In inclusion, I extend my gratitude to all the stakeholders who have contributed to the success of these initiatives. The support of the Government of India, coupled with the vision and leadership of our Honorable Chief Minister, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, has propelled the Andhra Pradesh towards a future of accessible, affordable and comprehensive healthcare. As we lay the foundation of the critical care blocks, integrated public health laboratories and BSL-3 lab today, let us collectively envision a healthier Andhra Pradesh. Our commitment to healthcare will continue to shine brightly in the years ahead, ensuring the well-being of each and every citizen. As I bring my remarks to a close, the concept of envisioning a developed India by 2047, named Vikasit Bharat, is not only an inspiring but also sets a positive precedent for all the states. Andhra Pradesh, under the dynamic leadership of Chief Minister Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, is poised to lead the way in realizing the vision established by the Government of India. Thank you, and may our collective efforts pave the way for healthier and prosperous future in the state of Andhra Pradesh. Thank you all. नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने देश में स्वास्थ्य आधारित संरचना को मजबूत करने और सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया है। इसी क्रम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 अक्टूबर 2021 को 5 साल की अवधि के लिए 64,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट से एक महत्वाकांक्षी योजना पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का शुभारंभ हुआ। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रा को छोटे शहरों और कस्बों तक ले जाया जा रहा है। इससे छोटे शहरों में नए अस्पताल तो बन ही रहे हैं, हेल्थ सेक्टर से जुड़ा एक पूरा इकोसिस्टम विकसित हो रहा है। पीएम अभियान में 17,800 ग्रामीण इलाकों और 11,000 से अधिक शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है, जहां कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर की सुविधाएं दी जाती हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां और जिला स्तर पर 730 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं भी पीएम अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम अभियान ने पूरे देश में 602 क्रिटिकल केयर ब्लॉक यानी सीसीवी बनाने की कल्पना की। प्रत्येक क्रिटिकल केयर ब्लॉक की परिकल्पना है 100 और 50 बेडों वाले अस्पताल, जिसमें इमरजेंसी, आईसीयू, आइसोलेशन वार्ड, सर्जिकल यूनिट्स इत्यादि क्रिटिकल केयर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। अब तक 503 सीसीबी को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। अब तक देश के विभिन्न राज्यों को 25,000 करोड़ से अधिक रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जो मिशन के उद्देश्यों में निर्विवाद प्रगति को दर्शाता है। देश के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से पीएम अभियान के अंतर्गत बायो सेफ्टी लैब BSL-3 का प्रयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य संचारी रोगों की निगरानी, रोकथाम, संचरण के पैटर्न को समझने के लिए महामारी विज्ञान का अध्ययन तथा प्रकोप जांच और प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। इन अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं से न केवल शोधकर्ताओं को संक्रमण से बचाने के लिए, बल्कि सूक्ष्म जीवों को पर्यावरण में प्रवेश करने से रोकने के लिए भी डिजाइन किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य में पीएम अभियान प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 540 करोड़ से अधिक रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। आज आंध्र प्रदेश राज्य में माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण एवं रसायन व उर्वरक मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा तथा श्रीमती विडाताला रजनी स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आंध्र प्रदेश की उपस्थिति में वर्चुअल माध्यम से पीएम अभियान द्वारा वित्त पोषित आज राज्य में 84 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 2 जिलों में 2 क्रिटिकल केयर ब्लॉक
तथा एक बायो सेफ्टी लैब BSL 3 का शिलान्यास एवं 7 जिलों में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स IPHL का उद्घाटन किया जा रहा है। इससे आंध्र प्रदेश राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली और सुदृढ़ होगी। आंध्र प्रदेश में आज के प्रकल्प का शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित राज्य की यशस्वी हेल्थ मिनिस्टर रजनी जी, हमारे सांसद श्रीनिवास जी, हमारी दूसरी सांसद डॉक्टर सत्यावती जी, मल्लारी विष्णु जी, हमारे मेयर भाग्यलक्ष्मी जी, मंच पर उपस्थित सभी सीनियर अधिकारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज हमने क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास किया, BSL 3 लैब का शिलान्यास किया और कई इंटीग्रेटेड लैब का लोकार्पण भी करा। दोस्तों, कोई भी राज्य को, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है तो ये देश की प्राथमिकता होनी चाहिए कि देश के नागरिक स्वस्थ हो। स्वस्थ नागरिक, हेल्दी सिटीजन, हेल्दी सोसाइटी का निर्माण करता है और हेल्दी सोसाइटी होती है, सारी सोसाइटी, सारा समाज हेल्दी होता है तो देश को समृद्ध राष्ट्र बनने में मदद करता है। और इसलिए मोदी जी ने हेल्थ सेक्टर को हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ देखा। एक समय ऐसा था कि कोई लीडर आते थे, कहते थे मेरे यहां अस्पताल बना दो, तो जो पावरफुल लीडर थे उसके यहां अस्पताल बन जाती थी। कई जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था खड़ी हो जाती थी, कई देश के पार्ट व्यवस्था से वंचित रह जाते थे। मोदी जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हेल्थ एक्सेसिबल होनी चाहिए, हेल्थ अफोर्डेबल होनी चाहिए, सभी को स्वास्थ्य सुविधा का अधिकार मिलना चाहिए और इसलिए हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ सेक्टर में काम करना चालू करा। नतीजा ये निकला, आज देश में 1,70,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया। यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 5 to 6,000 पॉपुलेशन पर 1 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 10 टाइप ऑफ टेस्टिंग वहां हो सकता है। वहां वेलनेस के लिए प्रयास होता है। वहां कोई पेशेंट जाते हैं, उसका प्राइमरी ब्रेस्ट कैंसर का, सर्वाइकल कैंसर का, ओरल कैंसर का प्राइमरी टेस्ट हो जाता है ताकि पता चल जाता है कि कोई बड़ी बीमारी आगे तो नहीं बढ़ रही है ना। जब कोई भी डिसीज प्राइमरी लेवल पर होता है, उस वक्त जो डिटेक्ट हो जाता है उसका इलाज अच्छी तरह से हो सकता है। सेकंड में मोदी जी ने कहा कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना है, डॉक्टर चाहिए, वहां नर्सिस चाहिए। हम केवल अस्पताल बना देते थे और देश में डॉक्टर की कमी थी। दोस्तों, आजादी के बाद 67 इयर्स में 350 मेडिकल कॉलेज थी, केवल 9 साल में दूसरी 350 ऐड कर दी। आज 707 मेडिकल कॉलेज देश में है। Our student go in a medical study go to abroad, वो abroad जाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ ये फैसिलिटी नहीं थी।
मेडिकल कॉलेज बढ़ाई, 54,000 सीटें थी, नाउ एंड टुडे 1,07,000 MBBS की मेडिकल सीट है। नर्सिंग, अभी मोदी जी ने डिसाइड किया, एक 157 जो पहले मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गई है, सभी जगह पे नर्सिंग कॉलेज होनी चाहिए, ताकि हेल्थ वर्क फोर्स देश की रिक्वायरमेंट के लिए उपलब्ध हो, ये सुनिश्चित कर दिया। तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना, उसमें डॉक्टर की सुविधा होने लगी, उसको स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ जोड़ने के लिए बहुत समझने की बात है। जो कोई गरीब लोग होते हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर जाते हैं और वहां से टेली कंसल्टेशन की फैसिलिटी चालू करी, एम्स के साथ उसको जोड़ दिया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ उसको जोड़ दिया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एम्स वो हब बन गए और हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर वो स्पोक बन गया। दोस्तों, मैं थोड़े दिन पहले दिल्ली से एम्स का एक न्यू कैंसर सेंटर बना है झज्जर, और सब 54 किलोमीटर फार फ्रॉम दिल्ली में वहां जा रहा था इन हरियाणा। तो रास्ते में मैंने किसी को बताया नहीं था, मैं निकला और बोर्ड लगा था आयुष्मान आरोग्य मंदिर। मैंने पूछा नहीं, मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी रोको, मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में चला गया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में गया, एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एक पेशेंट को देख रही थी, उसको पता नहीं था कि मंत्री जी उसके पीछे आके खड़े रह गए। वो टेली कंसल्टेशन कर रहे थे पीजीआई चंडीगढ़ के एक एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, वो कंप्यूटर में उसके सामने था, पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बात कर रहे थे, पेशेंट बगल में बैठे थे। और पीजीआई के डॉक्टर ने कहा कि जरा पेशेंट से भी मुझे बात कराओ, तो उन्होंने थोड़ा कंप्यूटर मोड़ा और पेशेंट के साथ पीजीआई चंडीगढ़ के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ने उससे बात करी, उसका रिपोर्ट बताया। डॉक्टर वहाँ बैठा है, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप उसको इस टाइप की मेडिसिन लिख दो, एक सप्ताह के बाद फिर एक बार टेली कंसल्टेशन से जुड़ जाना। दोस्तों, एक घटना महत्वपूर्ण इसलिए है, एक गरीब परिवार के व्यक्ति शायद उसको वहां से रेफर कर देते कि जाओ आप दिल्ली चले जाओ, एक दिन का काम जाता, उसका पैसे का खर्च होता, गरीब व्यक्ति के जेब में पैसा नहीं होता है। दोस्तों, टेली कंसल्टेशन डेली 3 to 4 लाख टेली कंसल्टेशन के द्वारा लोगों का इलाज हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना से देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज की मोदी जी ने गारंटी दी है। आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट, मुझे खुशी है, आयुष्मान भारत योजना अपने स्टेट की योजना को संयुक्त रूप में बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर रहा है, उसका फायदा गरीब लोगों को हो रहा है। होलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ को आगे बढ़ाते हैं। 22 स्टेट में एम्स बनाई गई, अभी आपके यहाँ एम्स डेवलप हो रही है। धीरे 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 4-5 साल में ये एम्स इतनी डेवलप होगी, वो सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी मार्गदर्शन करेगी और टर्शरी केयर के लिए, स्पेशलिटी सुविधा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। मोदी जी के नेतृत्व में दोस्तों देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत में देश के हर नागरिक स्वस्थ हो, ये प्राथमिकता होती है। और इसलिए जो सरकार हमेशा सीखती है, हम लोग कभी मेंटली सैचुरेशन मोड में नहीं आते हैं। हमने कर दिया और कभी कोई चीज कितना भी कर दो इनफ नहीं होता है। बदलते समय के साथ बदलता रहना की आवश्यकता होती है। कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने देखा कि हमने इतना प्रयास करने के बाद और क्या कमी है, तो आउटपुट ये निकला कि अभी इंटीग्रेटेड लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन,
इतने बड़े देश में कहाँ क्या चल रहा है, कौन सा डिसीज चल रहा है, उसका इंटीग्रेशन होना बहुत आवश्यक है। ब्लॉक लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, रीजनल और सेंट्रल लेवल तक एपिडेमियोलॉजी की लैब की श्रृंखला के द्वारा देश को जोड़ने की कोशिश की गई, ताकि कोई लास्ट पैमाने पर, कोई लास्ट लोकेशन पर कोई नया डिसीज दिख गया, जीनोम सीक्वेंसिंग में पता चला, तुरंत ही ऊपर फ्लैग हो जाए कि यहाँ कुछ इस टाइप का वायरस, इस टाइप का डिसीज देख रहा है, ताकि उसका इलाज करा जाए। वैसा ही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिटिकल केयर ब्लॉक, कोई भी इमरजेंसी की स्थिति में, कोई पेंडेमिक की स्थिति में लोगों को इलाज के लिए दिक्कत ना हो, वहाँ वेंटिलेटर हो, वहाँ ऑक्सीजन हो, वहाँ ऑल टाइप ऑफ फैसिलिटी हो, ऐसा क्रिटिकल ब्लॉक 602 डिस्ट्रिक्ट में बनाने के लिए तय किया। 64,000 करोड़ रुपीस 5 इयर्स में पूरा करना है। 64,000 यानी कि देश में 640 डिस्ट्रिक्ट, अब काउंट करो, 730 है, तो उसका नतीजा ये निकलता है पर डिस्ट्रिक्ट में एवरेज 80 से 100 करोड़ रुपया का खर्च आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत करना है। आंध्र प्रदेश ने अच्छा परफॉर्मेंस करा है, और जो स्टेट अच्छा काम करता है, हमारे रजनी जी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर मेरे पास दिल्ली आती है, कई काम लेके आती है, भैया मुझे ये चाहिए, हमारे स्टेट में वो करना है, हमें क्रिटिकल केयर यूनिट बनाना है, हमें ये हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए ये मेडिकल डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, हमें मेडिकल कॉलेज बढ़ानी है। दोस्तों, हेल्थ सेक्टर में एक समय था, हम कहते थे राज्य की ओर से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए फंड के लिए जाते थे, पैसा दो पैसा दो, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती थी उपकार के भाव से। दोस्तों, हम उपकार के भाव से नहीं मानते हैं, हम हमारी जिम्मेवारी समझते हैं स्टेट को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को हर संभव मदद करे, और इसलिए हम कहते हैं खर्च करो खर्च करो। मैं रजनी जी को एश्योर करना चाहता हूं कि आपके यहां हेल्थ सेक्टर में भारत सरकार की ओर से मदद के लिए कोई कमी नहीं रहेगी। आप जितना खर्च करते चलोगे, ये 5 साल का प्लान है, आंध्र प्रदेश 2 साल में पूरा करे तो मैं 2 साल में सारा पैसा दे दूंगा। मैं सुबह में कृष्णा बाबूजी मेरे से बात कर रहे थे, मैंने कहा आप खर्च करना चालू करो, पैसा देने में मैं दिक्कत नहीं होने दूंगा। हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में मिलकर प्रयास करें। हम फेडरल डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम कर रहे हैं, सेंट्रल और स्टेट अलग नहीं हो सकता है, स्टेट होके सेंट्रल बनता है, सेंट्रल की सभी के प्रति जिम्मेवारी है। जो प्रोएक्टिव काम करता है वो ज्यादा लाभ ले लेते हैं। आंध्र प्रदेश प्रोएक्टिव काम करते हैं। मैं हमारी सत्यावती जी को अभिनंदन देना चाहता हूँ, ये एमपी है, वो बार बार मेरे पास आ जाती है, और जो ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं उसको थोड़ा फायदा भी हो जाता है। मुझे भी 3-4 बार आते हैं तो ऐसा लगता है कि 3 बार आई है तो चलो मदद कर देते हैं उसको, उसके हॉस्पिटल के लिए। उसके डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल होगी, भैया आप आना, वहाँ उद्घाटन करना, और धीरे से कहते हैं, मैं कहता हूँ किसका उद्घाटन करना, तो कि क्रिटिकल केयर ब्लॉक का उद्घाटन करना है। तो मैंने कहा मैं आपको जब अलॉट करूँ तब उद्घाटन करूंगा ना, तो कि इसलिए ही आई हूँ। दोस्तों, ये मेहनत करने से आउटपुट होता है। जितनी जनप्रतिनिधि और सरकार एक्टिव मोड में काम करती हैं, आउटपुट अच्छा देखता है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में बहुत अच्छा काम करती है। मैं रजनी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन करूंगा।
आप आगे बढ़िए। भारत सरकार हर संभव आपको मदद करेगी। धन्यवाद। Commissioner, Health and Family Welfare, Mission Director, National Health Mission, respected It's my pleasure and privilege to offer vote of thanks to Honorable Union Minister for Health and Family Welfare, Shri Mansukh Mandviya ji, and Srimati Vidudala Rajani ji, Honorable Minister for Health and Family Welfare, Government of Andhra Pradesh, and Shri Kesneni Srinivas ji, Honorable Member of Parliament, and Shri Malladi Vishnu Garu, Honorable Member of Legislative Assembly, and Srimati B. Setti Satyavati Garu, Honorable Member of Parliament Ankapalli, and Mayor of Vijayawada Municipal Corporation, Srimati Rayana Bhagyalakshmi Garu, Shri M.T. Krishnababu Garu, Special Chief Secretary to Government Health, Medical and Family Welfare, and Dr. Ashok Babu Garu, Joint Secretary, Ministry of Health, Government of India, and other dignitaries and officials from Government of India, friends from media, and state government health officials. And I thank you one and all for making this program a grand success, and thank you one and all. Thank you.